What's wrong? What? Showing the engine is locked. But why? See, I don't know why the car's engine is locked. I hope you guys can see. It says my car's engine is locked. I was here for some work. I went to bank, and all of a sudden when I going back to home and my car won't start. So guys, I don't know what's wrong with it, but when I try to start it, it shows my car's engine is locked and it shows like this. So I'll have to call Tata Motors. So I tried my best to start this car, but it won't. So now I am calling to Tata Motors. So maybe they can help me and can give some tips. How can I start it? How can I shorten this? If not, then maybe let's see what happens. I have their number, and meanwhile I can check on this. Maybe they have some instructions on it, because this is the first time my car's engine is locked. Hello? Yeah, Tata Motors. Ma'am, actually my car's engine is locked, and I tried to start it every ways, but it won't. Can you help me out with this, or you can send some help for me? Yes. Okay. Yeah, I checked on manual and it says if you have your car's engine locked, so you need to call the car's Tata Motors immediately. So that's why I called you. Okay. 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 Okay, first I'll try in that way. If it doesn't work, then I will call you again. Yeah. Okay. Thank you. So they gave me a few tips. I will try them if it starts. So what they told me is just take out the key and press both the button, lock and unlock together. When it starts beeping, then I'll have to press the unlock button again and now try to start. What happened? No, it's not working. It's showing the same thing. Still, see, it's still the same. See, it's still the same. See. So now it's time to use the second trick she gave me.
She said to unplug the car's battery plug or whatever it is. I just have to look on it and then try to plug it again, and maybe it would, the car's engine would unlock. So I have this tool and let's try in that way. Guys, trust me, this is a really real situation and I don't know what's gonna happen, but what she told me to just unplug this and maybe doing this. I mean, it's just like your computer is hang and you just turn it off and restart again, so maybe it will work. We'll just see how it's gonna work for, but we'll wait for another maybe 30 seconds or 1 minute, then after I'll plug it again and see if it's gonna work or not. But this is real situation. I'm not making the video to show you, it was just a real situation. That's why I'm making a video to show you how I'm gonna sort it out and give you some tips कि आप लोग भी इसको देख करके, if you have that kind of situation, so how to come out with this. So let's see. Let's wait for a few minutes and then I'll catch you. I think it's enough time we can connect it again. Ouch. And always keep tools like this in your car for any emergency. I think it's done now. Now I will try to start the car and let's see what happens. This rig will work. I'll have to call Tata service and they will check what's wrong here, and I use every trick but it's not gonna work, so I'll have to call them and see what needful they can do for me. अभी कार को खुद से ट्राई करने के बाद when I was failed, so I tried roadside Tata roadside assistant, and they sent me the person, the mechanic, and he was doing jump start. As you can see, उनके पास एक बैटरी थी, उस बैटरी को मेरे कार की बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और ऐसा करने से आपकी कार की बैटरी चार्ज हो जाती है, एंड देन जब आपकी कार स्टार्ट रहती है तो बैटरी जो है उसको पावर हो जाती है और कार की बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है. इसके ऐसा क्या होता है इसमें कि इस केस में आपकी कार की बैटरी जब टोटल डेड होती है तब ये जंप स्टार्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है. एंड यहाँ पर मैं उनसे पूछ रही थी कि ऐसा क्यों हुआ ऑल ऑफ सडन, बिकॉज इससे पहले कार कभी भी रुकी नहीं और अचानक ऐसा क्या हुआ कि कार एकदम से ही डेड हो गई, एकदम से बैटरी डेड हो गई.
So he was saying कि आपकी कार की बैटरी कितनी पुरानी है. Then I was telling him कि अभी 3 साल ही हुए, 3 साल भी नहीं हुए. So he was saying कि जो कार के साथ बैटरी आती है, जब आप कार परचेज करते हो तो उसके साथ की बैटरी 2 से 2.5 साल ही चलती है. बट मेरी कार को 3 साल होने वाले हैं. तो he was saying कि आपकी कार की बैटरी बहुत अच्छी चल रही है. एंड उसके बाद मैंने कार को थोड़ी देर स्टार्ट करके छोड़ा. ही वॉज सेइंग कि कार की बैटरी आपकी पूरी तरीके से डेड है, सो यू नीड टू चेंज द बैटरी. और आप इस गाड़ी को बस जा करके अपने यहाँ पे पार्क कर दीजिए, क्योंकि आप इसको कहीं ले जा नहीं सकते. तो अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो नेक्स्ट डे का वीडियो है. यहाँ पर हमने लोकली किसी मैकेनिक को बुला करके और बैटरी चेंज करने का डिसीज़न लिया, बिकॉज कार की बैटरी टोटली डेड थी. सो उस केस में कार को सर्विस सेंटर तक ले जाना वाज नॉट पॉसिबल. तो वी डिसाइडेड टू कॉल समवन हु कैन फिक्स द न्यू बैटरी एट आवर प्लेस. जैसे अब आपने बाहर से लगवा रहे हो, इसकी थोड़ी मजबूत आई है, थोड़ी मतलब कैपेसिटी मतलब सारी चीज़ बढ़िया है. उनकी जो प्लेट होती है वो थोड़ी हल्की होती है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 साल की. अब आप ये बाहर से ले रहे हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल या 4 साल. ने चेक करके बताया कि कार की बैटरी बिल्कुल डेड है, अब चेंज करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं था. सो ही वॉज कैरिंग सेम एमरॉन बैटरी. एंड देन उसके बाद उन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया. आई रिकॉर्डेड एवरीथिंग टू शो यू. एंड एज यू कैन सी भैया उसके बाद अपने काम में लग गए. उन्होंने बैटरी चेंज करी एंड उसके बाद एवरीथिंग वाज फाइन. तो फाइनली कार की बैटरी हो चुकी है चेंज. इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी परेशानियों के बाद आज फाइनली नेक्स्ट डे पर वी डिसाइडेड टू चेंज द बैटरी, बिकॉज बैटरी वॉज कम्प्लीटली डेड. तो इस केस में बैटरी चेंज कराना ही एक उसका सोल्यूशन था. सो वी डिड call someone and they changed the battery. Okay, and now see how it's gonna work. बिकॉज कार के साथ में जो बैटरी आती है दे सेट की उसकी लाइफ जो होती है 2 और 2.5 years की ही होती है. बट हमारी कार की बैटरी वॉज ऑलमोस्ट 3 years and now all of a sudden it's dead. So yeah, we changed it and now I'll show you how it works now. चलो जी देखते हैं अभी एक बार में गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं होती है. क्लच एंड सेल्फ. गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई है. अभी यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन नहीं दिखा रहा है. जस्ट हैंड ब्रेक एंड एवरीथिंग इज गुड. सो अभी कल मुझे कार की सर्विस भी करानी है. सो फ्यूल ज़्यादा नहीं रखा हुआ है. सर्विस के टाइम पे फ्यूल गाड़ी में ज़्यादा नहीं छोड़ते हैं. हाँ, फाइनली अभी कार अच्छी तरीके से काम करेगी. एंड आई होप कि अब ये ना रुके कहीं रास्ते में, क्योंकि अभी मुझे लॉन्ग ट्रिप पर जाना था कहीं. आई थॉट कि उससे पहले सब कुछ फिट होना गाड़ी में बहुत ज़रूरी है. अगर आप कहीं भी लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें पहले आपको चेक करनी ही पड़ेंगी.
अगर लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं तो उससे पहले सर्विस कार की बहुत ज़रूरी है. सो थैंक गॉड कि मेरी गाड़ी ने पहले ही इंडिकेट कर दिया, बिकॉज एक दिन पहले ही मैं कानपुर ट्रिप से वापस आई हूँ, जो कि है 450 किलोमीटर फ्रॉम नोएडा. और उस ट्रिप के बीच में, उस ट्रैवलिंग टाइम के बीच में गाड़ी कहीं ख़राब नहीं हुई. दैट इज़ अ गुड लक फॉर अस. दैट वॉज एंड नेक्स्ट ट्रिप से पहले ही गाड़ी ने इंडिकेट कर दिया कि येस my battery is gonna dead, so please change it. So yes, अब वो भी काम हो गया है. सर्विस कल हो जाएगी. कल मीन्स अब आई डोंट नो कब वीडियो जाएगा. सो बट जिस दिन कार बैटरी चेंज हुई है उसके नेक्स्ट डे पर कार सर्विस के लिए जाएगी, एंड देन इट्स कम्प्लीटली फाइन फॉर अ नेक्स्ट ट्रिप. Is a useful, so please do like the video, subscribe to the channel and do share the video so that कि किसी और को भी इस सिचुएशन में कुछ टिप्स मिल सकें. Because see, there are many videos on the Tata Tiago's car batteries related, but I tried every tricks. I was watching so many videos at the time when I was stuck, but कोई भी ट्रिक उस टाइम पे काम नहीं करी. Then finally I called Tata Roadside assistance and they came and checked and got the solution, like my car's battery is dead. So yes, I am posting this video for some needful tips for someone else. So please do share the videos. Okay then, see you, bye bye, good luck.